Hey guys, hi, once again welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Prem and I'm live in front of all of you. So how are you all doing? कैसी चल रही है जिंदगी? हाई टू एवरीवन. लेट नहीं है, 1 मिनट लेट हो गया, ठीक है, इट्स ओके, इतना तो होता है. हाई. सो हाई खुशी, हाई हरलीन, हाई रुद्राक्ष, हाई आयुष. कैसे हो तुम लोग? हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, चरण स्पर्श, खुश रहो. रुद्राक्ष, कैसी चल रही है जिंदगी? सो ऑल गुड, ऑल ग्रेट, बढ़िया, मजे में. गुड आफ्टरनून दीपांशु भाई, और सब बढ़िया. चलो, सो पीपल, शुरू करें आज का सेशन. टुडे सेशन इज अबाउट माइंड मैप्स और आज हम लोग माइंड मैप्स को कंप्लीट कर देंगे, ये वाला सीरीज भी, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. तो फाइनल दिस इज द माइंड मैप्स ऑफ, मतलब इस चैनल पे माइंड मैप्स कंप्लीट हो जाएगा आज. तो मेंटी वॉर्स में बहुत मजा आया. ओके आयुष, दैट्स ग्रेट. एकदम बढ़िया चल रही है जिंदगी. अनु, तुम्हारी कैसी चल रही है? ऑल गुड. चलो, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. माइंड मैप्स का स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी देखना है हमें, तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट. तो हियर वी गो पीपल. स्टार्ट करने के पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑल दोज पीपल हु वांट टू ज्वाइन वेदांतु, यो. सो वेदांतु ज्वाइन जो करना चाहते हैं वो सारे बच्चे वेदांतु ज्वाइन कर सकते हैं. ऑलरेडी चाहते हो तो कर ही लोगे, बिल्कुल. कैसे ज्वाइन कर सकते हो? तो उसको ज्वाइन करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, ये लिंक लिखा हुआ होगा vdnt.in/ytpro. क्या लिखा होगा? vdnt.in/ytpro. अब मैं बता दूं कि ज्वाइन क्यों करना चाहिए, मतलब फायदे क्या है, क्योंकि लाइव तो तुम यहां भी पढ़ रहे हो. सारे बच्चों का यही रहता है पॉइंट कि सर वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन क्यों करें जब लाइव में आप पढ़ा ही रहे हो, यूट्यूब पे हो ही, वो भी आप भी लाइव हो, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है वीडियो की, तो फिर पैसे क्यों देने? तो देखो, पैसे क्यों देने हैं, एक्चुअली उस जो सर्विसेज पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है. जैसे सबसे बड़ा सर्विस जो तुम सारे बच्चों को चाहिए, जो सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए, दैट इज डाउट सपोर्ट. हर बच्चे को, चाहे वो जितना तेज हो, चाहे वो जितना कमजोर हो, बच्चे को डाउट का सपोर्ट चाहिए. बच्चा चाहता है कि उसको कोई डाउट आए, वो कुछ पूछना चाहे तो टीचर अवेलेबल हो या कोई तो अवेलेबल हो. तो वो डाउट सपोर्ट यूट्यूब पे नहीं है, जो कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में. फर्स्ट बिगेस्ट थिंग. सेकंड, जब आप पढ़ लेते हो तो टेस्ट देने की जरूरत है, नहीं तो पता कैसे चलेगा? स्कूल वाले तो स्कूल का टेस्ट लेंगे, स्कूल के लेवल का. अगर तुम कुछ उससे हायर लेवल पढ़ रहे हो, अलग पढ़ रहे हो, तो वो हायर लेवल का टेस्ट चाहिए. तो आपको डाउट चाहिए, टेस्ट चाहिए, और डेली जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस भी होना चाहिए, घर पे भी प्रैक्टिस होना चाहिए, बुक्स के रिलेटेड सपोर्ट होना चाहिए. तो वो सारे के सारे डेली प्रैक्टिस पेपर, ये चीजें. एट द एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कोचिंग का काम क्या होता है? कोचिंग का सिंपल सा काम होता है यार कि बच्चा जहां पे कमजोर है उसको जैसी भी मदद चाहिए वो मदद कोचिंग दे सके. क्योंकि स्कूल और कोचिंग में यही तो अंतर होता है ना. स्कूल अपने आप को बदलता नहीं है. स्कूल इज लाइक हम अभी इस चैप्टर पे हैं तो इसी चैप्टर पे रहेंगे. सिर्फ समवन सेज कि सर आप 5th चैप्टर पढ़ा रहे हो लेकिन मेरे को फर्स्ट नहीं समझ में आया, क्या आप मेरे को दोबारा पढ़ाओगे? सर बोलेंगे बेटा अभी नहीं हो सकता, कभी और आना, किसी और से पढ़ना, लाइक दैट. तो अब वेदांतु में कैसे इसको कवर अप कर सकते हो? तो वेदांतु में माइक्रो कोर्सेज होते हैं. माइक्रो कोर्सेज आर लाइक पूरा एक चैप्टर, पूरा नया कोर्स. तो अगर मान लो तुमको 5th चैप्टर पे हो तुम और तुमको 1st चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए माइक्रो कोर्सेज होते हैं, उसके भी पैसे लगते हैं. बट जब आप प्रो सब्सक्रिप्शन में आते हैं तो वो पूरा का पूरा माइक्रो कोर्स फ्री हो जाता है. तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण से वी प्रो इज अ मच मोर बेटर ऑप्शन कंपेयर टू एनी अदर ऑप्शन. ये पहली चीज. अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेटर ऑप्शन तो समझ में आ गया. अब इसको जब ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पे जाओगे तो लिंक पे जाने के बाद आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसका, एक सेकेंड, जैसे कि इसका प्राइस क्या है एंड ऑल दैट. तो ये सारे आपको मिल जाएंगे. प्राइस जो अभी चल रहा है वी प्रो सब्सक्रिप्शन का वो है 2500 फॉर ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश. 2500 में सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, 6 के 6. लेकिन जब आप HPE Pro, इफ यू यूज द HPE Pro कूपन कोड, तो इस HPE Pro से यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट एंड दिस कोर्स विल कम इन 2000 रुपीज. 2000 में ऑल 6 सब्जेक्ट. तो दैट इज द डील और फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, फाइन. सो बिजली प्रो, ओके अनु, टुडे वाज योर प्री बोर्ड, यू मिस्ड वो, नो इश्यूज गणेश, इट्स ओके.
Fine. So I hope you all understood what's the benefit of Vedantu Pro subscription and why a student should buy it, because there has been a long question that said, what is the need of Pro subscription? So I have explained that, what's the need. Let's move on. Let's get into the session. So first thing, statistics. Statistics, we all know it's a collection of data and represented in a proper format. That is statistics, data. So what is data? It's a fact or whatever you do, some survey, something like that. That is data. Frequency distribution. So if any particular data, it comes how many times. So number of times it appears, that is called as frequency. Moving on, cumulative frequency. It is just the addition of frequency. So you will understand it more in the table during the questions time. So I have already explained cumulative frequency multiple times. Okay. Moving on. Now next thing is class mark. So class mark is the middle value of class. I hope you remember that. I have already said you that if 0 to 10 is there, you will take the middle value, 0 plus 10 by 2. So that is the average of upper limit plus lower limit. Okay, average of upper limit and lower limit. That is called class mark. Moving ahead, measures of central tendency. What is the measure of central tendency? So there are three measures of central tendency. First, mean. So measure of central tendency means something which is lying in between. Average type of. ठीक है? Date sheet कब आएगी? Ashish, it's going to come very soon. Don't worry. Fine. So measure of central tendency, I hope you understood. Mean, बीच का. Okay. So first measure of central tendency is mean. So mean, median and mode. Three central tendencies are there. Mean, median, mode. Cool? Agreed? So please teach more than type median. Rajkumar, right now I can't teach because this session is only about mind maps. But in my regular sessions, in my where I teach the questions, there I have taken videos of sessions of statistics. You can check out those videos. Okay? Chalo. Probability जानू सर मैरिज इज इक्वल्स टू 1 by 1. अच्छा ऐसा है क्या रुद्राक्ष? जानू सर की शादी हो जाएगी मतलब तुम ये कह रहे हो? ठीक है, देखते हैं. Time will answer. So mean, median, mode. These all three are called as central tendency. Measure of central tendency. Moving ahead, finding the value of mean. So there are two methods which we have to study this year. First method, long method, that is direct method. Summation fi xi divided by summation fi. Summation fi xi divided by summation fi. This is the direct method. And second method is assumed mean method. Here you have to do summation fi di. In place of xi you will write di here. Summation fi di upon summation fi, and you will add a that is assumed mean. If you do remember, I have already said that here di mein xi minus a is there, and since we are doing xi minus a, so compensating that we'll have to put plus a. So that is there. Okay. Sir, from where we practice more questions? Harsh, go buy some good book, some mock paper book, some previous year question paper book, because I won't suggest internet materials. They are not so authentic. They might have wrong questions. So don't go for that. Buy some authentic material from Amazon, Flipkart, somewhere. Okay. How is your resolution going? Hitesh, not so good. Moving on. Next thing, mode. So formula for mode is L, lower limit, plus mod of f1 minus f0 upon 2 times f1 minus f0 minus f2 into h. Okay. So what's the formula? L means lower limit, f1 minus f0, frequency of the median modal class, minus f0 preceding, upon 2 times f1 minus f0 preceding and f2 succeeding. Okay. Into h. That's the formula. For median, the formula is lower limit L plus n by 2 minus Cf upon f into h. L plus n by 2, that is half of the total frequency minus cumulative frequency of the preceding class, preceding the median class, divided by f, frequency of the median class, into h, that is height of the median class. So today I watched our story. Acha. Okay, sir, please notify us about date sheet. Yes, Lingraj. Mode याद करने का तरीका Bonvita chapati. Okay. Moving on. Now this is an important formula. This is called as empirical formula. So everyone please remember it. The easiest method for remembering is this is, I have already said this multiple times to most of the student. Easiest method to remember this is 3 minus 2 equals to 1. 3 minus 2 equals to 1. 3 is the largest number.
Largest number, तो largest word 3 with median. Median is the largest word having maximum number of letters. Then 2 is the second largest. Now mode and mean both have 4 letters. So 3 में ध्यान से देखो, 3 में I have put ME median. So -2. In 2 I would like to put the same ME mean. Okay, so by this you can remember it. याद रखने का ये तरीका है. 3 median 2 mean equals to 1 mode. Mode में that is completely different, तो उसको उधर भेज दो. MO mode. Got it? सबको समझ में आ गया? याद रख पाओगे? Come on, tell me yes or no. Sir, make video call to Abhishek sir. अच्छा, shall I make a video call to Abhishek sir? ठीक है, करते हैं. Can you speak Marathi? No, Shrishti, I can't. Let's move on. If you all understood. This is the next information. It's an information for all of you. We are not over yet. अभी probability बाकी है. So information is that Vedantu is giving you, all of you guys, 2 years JEE course absolutely free. 2 years JEE course and 2 years NEET course. How? Through a test. But that is, so you might be thinking, sir, test तो हमेशा ही होता है. So what's new? So the new thing is that this time the test is going to be completely new. In this test, you are not being asked physics, chemistry, maths, biology. No. In this test, there will be 40 questions of mental ability only. There will be 40 questions of mental ability only. So in this test, you get an opportunity of having complete 2 years JEE and NEET course absolutely free. And you have to just take a test having 40 mental ability questions. Isn't that great? So when you have to take the test date is 4th of February, this Thursday, 7 p.m. in the evening. Where will it happen? It will happen on Vedantu platform, vedantu.com. And how will you get the link of the test? So you have to go to Telegram channel. The name of the Telegram channel is Vedantu's Gift to All. So Vedantu's Gift to All, you have to search this name, Vedantu's Gift to All. You will get the channel. Join there. There you will get the test link and then you can take the test. Okay? Fine. Mental ability test. Absolutely right, Dipanshu. कितने राउंड होते हैं सर? 2 rounds, Pratyush. First is mental ability. Second is 1-to-1 interview. That's it. That's done. Then you are good to go in the batch. Okay? Fine. Let's start the probability. So probability is pretty simple thing, that number of desired events divided by total number of events. So elementary event is there, complementary event, sure event or certain event, like is Harsh sir handsome? So yeah, surely it's a sure event, 1 by 1. Absolutely yes. Complementary event. So Harsh sir is handsome and Abhishek sir is fat. Yes, it's complementary. Like me very handsome, he being fat. So yeah, these two are called as complementary events. So if I am like, say for example, I am 90% handsome. So where is the remaining 10%? God has given 10% handsomeness to whom? So that remaining 10% handsomeness has been given to Abhishek sir. So he is just like 10% handsome. So that is called as complementary. Like that is why we have such a strong friendship, isn't it? Like me being 90% handsome, he being 10% handsome. So we both together make 100% handsome. Like so that is called as complementary. I hope you understand, isn't it? No, Janu sir is so cute and handsome. हर चल झूठी हट. ये सब बस मोह माया बेटा. ये सब बस ऐसी अफवाहें हैं. जानू सर इज हैंडसम. क्या मजाक करती है तू भी. हट. ये झूठी कुछ भी बोलती है. So खैर anyways, I understand, no issues. You are big fan of Abhishek sir. बेटा देखो अब मिथ्या और मोह माया में क्या कहूँ. कोई बात नहीं. It's okay. Fine. Let's move on. Elementary event. तो elementary event having only one outcome of the experiment. ठीक है, तो only one outcome. जैसे if Abhishek sir goes for marriage, like if he tries to propose a girl, तो sure event like outcome will be no, is it? Because he has tried multiple times in the past. तो that will called as an elementary event कि उसका सिर्फ एक ही outcome है, that girl will say a no. He proposes to a girl and girl will say no. So that's an elementary event. Only one outcome. That is a no. Isn't it? So I hope you understand what is elementary event. Yeah, understood. जोश कम है सर. अरे अब तो मैं क्या कर सकता हूँ यार अभिषेक सर, में जोश कम है तो मैं क्या करूँ पलक. Like I can't help it, isn't it? I tried him. I said him multiple times. Do something, buddy. Do some gym, run, or do something yoga and everything. But like he does not understand. He does not agree.
What can I do if जोश is less? जानू सर आपको छोड़ेंगे नहीं यार, यही तो दिक्कत है ना, वो मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ और पकड़ने की जरूरत है। लाइक मुझे पकड़ के रखेंगे तो क्या फायदा? आई एम ऑलरेडी सेटल्ड, आई एम मैरिड। यही तो दिक्कत है ना, जानू सर मुझे नहीं छोड़ेंगे, यही दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके फाइन, so please teach in English. Harry Potter, absolutely. Sorry, I'm coming back to English. Yeah, let's move on. So this is some of the probabilities. Fine. So sum of the probability is always 1. Always remember, sum of multiple events of a probability. If all those events are of the same set, then sum of probability is always 1. Probability can never go beyond 1. Above 1 probability is not possible. Okay? Jealous? Video call to Abhishek sir. Okay. Fine, I'll do that video call to Abhishek sir. So here we have types of probability. That is, one is theoretical probability, and in that theoretical probability you all should know that probability will always be between 0 to 1. So probability will never go above 1. Probability can never be negative, isn't it? It can be minimum 0. Like you know what is the zero probability. I don't think I need to tell you that an example of zero probability. You all know what is the best example of zero probability. You know that, isn't it? देखो बच्चे लिखने भी लगे कि जीरो प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल क्या है। ओके, सो एवरीवन इज लाइक राइटिंग जीरो प्रोबेबिलिटी की व्हाट इज द मतलब एग्जांपल ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। एनीवेज, तो लेट्स मूव ऑन। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज समथिंग where you do some experiments, then the number of favorable outcomes or desired outcomes divided by total number of outcomes. So it's like more or less same. You don't have to get into कि कौन सा type का probability, which probability is which. You have to just understand these two are things. Moving on, Mentee. Fine. तो are you all ready for Mentee? Come on, tell me, मेरे प्यारे बच्चों, Mentee के लिए ready हो? Just give me a moment. Let me start the Mentee और Senti part. So people, we are going to start the Mentee here. So everyone, this is the Mentee here I present, and everyone go to mentee.com and use the code 6716766। कितना 6 आ गया है? Anyways, तो see the Mentee code, सारे लोगों को दिख रहा होगा। Do you remember I am Yashwant sir? You should take my name. Hi Yashwant, what's up buddy? संस्कृति डेट शीट इट विल कम, देन वील गिव यू द इंफॉर्मेशन। अभी आ जाने दो, दे देंगे, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सर प्री बोर्ड के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता दो। निंजा द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्री बोर्ड इज Mentee। ठीक है, गो टू Mentee एंड यू विल हैव द स्ट्रैटेजी। तो यूज द कोड 6716766। जल्दी से कोड बताओ। बता दिया विराट? ओके, सो आउट ऑफ 7 digits 4 are 6। यस एब्सोल्युटली। देखो, अच्छा तुम लोग बोल रहे थे ना लाइक यू गाइज आर कॉन्फिडेंट अभिषेक सर की शादी नहीं होगी। मुझे भी यही लगता है, और जोश कम है वो तो मुझे 200% लगता है। ठीक है, तो गो अहेड। अच्छा यार, वैसे पता है मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभिषेक सर को बुला के आज समझाऊं, तो आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम कि आज आओ एंड आई विल टेक हिज सेशंस टुडे। सो या ही इज एट माय प्लेस एंड देखो आज मैं इसीलिए बुलाया था अभिषेक सर को। देखा, मैं सही बोल रहा था, अभिषेक सर को मैं बुलाया था ना। मानते नहीं आप लोग? आप एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, आप बोलो करना क्या। समझ में आया, इसीलिए मैं बोल रहा था। बच्चे अभी यही बोल रहे थे, सर अभिषेक सर विल नेवर लीव यू, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। Exactly. और मैं उनको बताया यही प्रॉब्लम है। हाँ। इसीलिए आगे का मामला कुछ सेट नहीं हो रहा है, लोग बहुत गलत समझ रहे हैं। तो बच्चों समझाओ कुछ, ऐसे नहीं। देखो ये अभिषेक सर की शादी नहीं होगी। देखो मैं भी यही चाहता हूं बेटा, मैं भी यही चाहता हूं बेटा। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आलोक अभिषेक सर को गलत सलत भावनाएं मत जगाओ, इनको समझाओ कि ये सही नहीं है। आई नो क्या, आई नो, मैं सब सुन रहा हूँ, बस सेलेक्टिव हियरिंग है, बाकी चीजें नहीं जा रही है। ओके सर यार, डेट शीट के बारे में सेशन आ जाएगा आज, अभी तक रिलीज हुआ नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, मोस्टली हम दोनों ही आ जाएंगे, चिंता नहीं है। ठीक है बच्चों, चिंता मत करो, चलो एंजॉय करो, बाय बाय। ओके बाय, फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज हियर वी गो फॉर द Mentee। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज गोइंग टू बी दिस। ध्यान से एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन सेज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर of 5 questions. So everyone just put your name here and here we will be moving on. समझा दिया सर, सानवी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, like once I complete the session then I'll make him understand. So here we go people, first question on your screen is this.
क्वेश्चन कह रहा है if the median of the data 4x 7x minus 1 x minus 3 this written in ascending order is 13, then x is equal to what? So this is in ascending order and median means mid value. So 1 2 3 4 5 6 observations are there. Mid value will be third and fourth. These two are the mid values. So you have to take the average of x minus 1 and x minus 3 and then you have to equate it equal to 13. So x minus 1 plus x minus 3 divided by 2 is equals to 13. You'll do cross multiplication and 13 2s are 26. So 2x minus 4 is equals to 26 and if I am not wrong x is equals to 15 शायद मेरे हिसाब से जहां तक आ रहा है. I am getting that. So yeah, I'll just write this answer here because it's super easy. X minus 1 x minus 3 you have to average it. X minus 1 plus x minus 3 whole divided by 2 is equals to 13. You have to solve it. You will get x equals to 15 and that's the answer. See, that's it. It's super easy, isn't it? Yo 26 is with 15 and 26 are with 14. I could not understand. बेटा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने -1 -3 इट इज -4 नॉट -2. आप लोग -2 अगर सोच रहे थे तो लाइक दैट इज नॉट राइट. ओके सर, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? सो मंजीत, डिस्क्रीट सीरीज इज एनी सीरीज वेयर द डेटा इज नॉट रिटन इन द क्लास फॉर्मेट. इट इज रिटन इंडिविजुअल डेटा. जैसे ये डिस्क्रीट डेटा है, like 1 by 1 data. It is not in the class format. Okay, fine. So 26 students are right, only 36%. क्या कर रहे हो? What you people are doing? Oh, so guys, please pay attention. You have to do it right. Let's move on. Let's see the leaderboard. Here we go for the leaderboard. Okay, so let's see how many of you do it right. So Kubra is fastest. प्रियम मैथ ओवरपावर्ड. नालायक, ये बाल्ड कैसे क्यों लिखा भाई? मैं देख इतने सारे बाल है मेरे, लाइक सो मेनी हेयर्स. टॉम, स्टिंगिलिशियस, सेबेस्टियन, अंजना, प्रांजलि शेरावत एंड स्मिथ एंड लकी एंड समर्थ. वेरी गुड यार, ग्रेट एफर्ट. सर इज डूइंग एनसीईआरटी completely important like okay ninja, I do not get it, but anyways, let's move on. Here is the next question for all of you. Second question of the series. Here we go. Question says, please pay attention. The median of 276x is 5. The mean of 1816x and y is 10. What is the value of y? Okay, so guys, first of all find the mean. So find the value of x. Mean means 2 plus 7 9, 9 plus 6 15, 15 plus x whole divided by 4 because 4 quantities are there. See guys, come on, solve it. You'll have to solve. So add all of them. 2 plus 7 plus 6 plus x whole divided by 4 because 4 quantities. This mean is 5. Cross multiplication, x will come as, if I am not wrong, 5. So x is 5. Put that 5 here. 18 plus 1 6 5 and y. This mean is 10. So you have to write 18 plus 1 plus 6 plus 5 plus y whole divided by how many quantities? 5 quantities. So 5. This mean is equal to 10. This mean is equals to 10. Okay, and then the value of y. You have to find the value of y. So you have to do a cross multiplication and everything. As usual, Mentee is not working for me. Okay, devil, please refresh. So you have to do cross multiplication. 18 plus 1 19, 19 6 25 5 30. So y plus 30 is equals to 50. Y plus 30 equals to 50. You have got the answer. Y equals to 20. Super easy. Come on, y equals to 20. Hi sir, Ram from Morena MP. Hi Mayank Sharma, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? So it's y equals to 20. Come on, 3 2 1, time's up. Here we go. Y equals to 20. Super easy. यार अभी भी इतने सारे बच्चे गलती कर दिए. Like why? C, but अनुश्री ऐसा क्यों गलती किया तूने? हैं? Answer is C. 42% students are right. Little more than the previous one. But guys, you had to wait. थोड़ा सा समझना था. You had to solve it and then you had to get the answer. That's very important. Okay. चलो, anyways, let's move on. Here we go for the next question. Next leaderboard. Here we see.
लीडर बोर्ड क्या कहता है? यार ये उल्टे सीधे नाम वाले बच्चे इतने ऊपर आते जाते हैं, बताओ। सो प्रियम मैथ ओपी, भाई ये मैं बाल कैसे कर रहे हो? बाल प्रियम इज एट फर्स्ट, देन संस्कार जय माँ जानेश्वरी अच्छा ओके, सो संस्कार एंड देन राहुल सिन्हा, जयश्री हर्ष, समर्थ, प्रांजलि शेरावत, लिटिल स्टुअर्ट, हाय स्टुअर्ट, एंड देन स्मिथ, हर्ष एंड अभी सर, ओवरपावर्ड, हर्ष उप्रेती, प्रयाग राजवाला, अच्छा प्रयागराज वाला, ही इज द फास्टेस्ट ऑल्सो, एंड देन चिंतन अभिषेक सर ओपी, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। सर का नेम बैल्ड प्रियम किसने रखा? आई रियली डोंट नो हसन, वैसे ये मेरा नाम नहीं है, लुक्स लाइक प्रियम टाइटल किसी का भी हो सकता है, सो दिस गाय माइट बी हैविंग द नेम बैल्ड प्रियम, isn't it? That is also possible. Fine, moving on to the next question. Here we go for the next question is question number 3rd. On your screen is this, question number 3rd on your screen is this. Question says, consider the following table. The mode of the below data is, you have to find the mode, and people you have to take time, understand, then solve it. So mode is the highest frequency. Highest frequency value is 25. So this is your modal class. This is your modal class F1, this is F0, this is F2. Apply the formula mode. Mode formula is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is the formula. Guys, come on fast. I will do it in my mind. I have to just put the values. 22, 25 minus 16, 9, 25, 50, 50 और 16, 9, 16, 36, 35, 15, तो 25 माइनस 16, 9, 9 बटा 15, 9 बटा 15 इंटू 9 बटा 15 इंटू 4, 9 चौके 36 बटा 15, 3, 12 बटा 5, 2.4 आ गया. I got the answer. I got the answer. You have to take your time. This is the formula. Solve it. I to got it answer. I to got the answer. Answer many of them are saying, यार you have to just put the values man. L की value put करो. So L value is 22. देखो, I'm just putting the values. 22 plus F1 is 25 minus 16 divided by 2 times F1 मतलब 50 minus 16 minus 19 and then multiplied by 4. This much. So 22 will be as it is plus this will come as 2.4. ये पूरा calculation, this bracket will come as 2.4. So this entire bracket is coming as 2.4. 2.4 plus 22, 24.4. Answer is C. Come on, it's not so tough. इतना भी tough नहीं है. Oh wow, people got the right answer. That's great, fantastic. So that was not so tough, was it? So if sine alpha and cos alpha are the roots of the equation, this. अच्छा, so Sahil, I guess you understood कि यहाँ पे doubt लेना is a little tough, isn't it? So fine. Moving on. Let's see the leaderboard. तो leaderboard कैसा दिख रहा है? Okay, क्या बात है संस्कार भाई, इस बार तो लगता है आपका गलत हो गया. So Bal Prem is the fastest, and then Rahul Sinha, Jayashree Harsh, Samarth, Harsh Upreti, Pranjali, Sherawat, Little Stewart, Chintan Abhishek, Harsh and Abhisar OP, and then Smith, and then Sanskar, Jayama Janeshwari. So all these students, very good, clap. Mokirala is saying, am I late? No, not actually. Like you have come at the second last question. So here is the second last question. Question number 4th of the session. Here we go. Question says the probability of getting less than 3 in a single throw of a die is less than 3. How many numbers you have less than 3? 1 and 2. So only 2 possibilities out of 6. Man, like super easy. 2 by 6. यार इससे ज़्यादा easy तो क्या ही होता? Sir, do you remember me? I was not able to attend live class because of school reopening. No issues, Dibya. That's okay. Fantastic. No issues. Chalo. So come on, people. Like this is super easy. 2 situations less than 3 and out of 2 out of 6. So 2 by 6, 1 by 3 is the answer. A. This is so super simple. I don't know why less number of students answered this. 1 by 3, yeah. Again, Anushri, yaar, again कैसे करें बताओ? You have to do it on time, isn't it? तू छूट गई बेटा. लगता है कहीं और जाके किसी को टपका रही थी, हैं? Fine. Moving on. Let's see the leaderboard. This time leaderboard will be interesting. Lot many changes. Let's see. इस बार राहुल सिन्हा गलत हो गए लगता है या छूट गए. तो Bal Prem is the fastest again, and then Samarth, then Harsh, Pranjali, Chintan, Little Stewart, Smith, Rahul Sinha, Shreya G, and Devika, Harshanand Baba ki jai. Oh, fine.
Okay, fine people. So if you all understood, here we go for the next question. That is question number 5th and the final question. So this is the final question, last question. So everyone just be overpowered and give me a right answer. Here we go. It's a probability question. So question says that 3 coins are tossed simultaneously. The probability of getting all heads is, it is so super simple, मतलब ultra simple. All head तो सिर्फ एक ही situation में आता. Only one situation has all head, isn't it? And if 3 coins are tossed, so what's the total number of outcome? Do you know this? Yeah, like everyone should know this. So 3 coins are tossed, the total number of outcomes are 8, isn't it? That is the total number of outcome. And desired outcome is only one, all heads. It is super easy. Bald Priyam, Nalayak. Okay, time's up. Here we go. 50% students right. I don't know why it's less, but anyways, 50% students got it right, and that's great, fantastic. Let's see the final leaderboard, people. Here we go. Go, go, go. Come on. Okay, इस बार तो लगता तो यही है that Bald Priyam is going to win. Okay. Fine, so here's the fast. Okay, so many student fastest, but Bald Priyam won. Very good, fantastic. Clap for him. Fantastic, buddy. That's great. Okay, you won. Okay, fine. That's great, yaar. It was really a fantastic session with you all. I really loved it, and I'm happy that all of you joined it and all of you learned something. So if you really like the video, just hit the khatak like button and subscribe to the channel. Put your lovely comments in the comment box or whatever comments you want, because I really love reading your comments. That is important. So put your comments in the comment box. I would really go through them, and it gives me a different type of energy. And with this, it's time to say goodbye. All those people who want to join Vedantu Pro subscription, link is given in the description box, and use the coupon code HPPRO. That will give you a 20% discount over the discounted price. So go ahead, people. Join in and get all your doubts sorted out, all your daily practice papers, all your All India test series and everything. Fine. So that was all for this session. Myself, Harsh Priyam, signing off at this junction. Seeing you all in the next session. Tab tak ke liye bye bye. Good night.